Good morning, students. Our today's topic is chapter number 9, Heredity and Evolution. Out of this chapter, evolution part is cut from the syllabus, so we have to study only heredity. For this chapter, I will give you notes. So first write these definitions in your copy. So I am explaining these definitions. Try to understand that one. First one is, what is heredity? The passing of characters from parents to offspring is known as heredity or inheritance. The characters which we get from our parents, that is heredity. The passing of character parents से offspring तक जो characters जा रहे हैं, that is heredity. All characters which are present in progeny are similar to their parents. Progeny means offsprings. बच्चों में जो भी करेक्टर्स होंगे वो उनके पेरेंट्स से ही आएंगे और उनके पेरेंट्स से रिजेंबल करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोजनी. द ऑफस्प्रिंग्स और डिसेंडेंट्स आर नोन एज प्रोजनी. आगे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन्हें हम प्रोजनी बोलेंगे. क्रोमोसोम्स, अ लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर इन अ न्यूक्लियस विच अपीयर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन. इट कैरीज जीन्स. So chromosome is a long rod-like structure. It is present inside the nucleus. On the chromosomes or some part of the DNA is known as gene. So genes are present on the chromosome. Chromosomes are made up of DNA that you have already studied in class 9th. Clear? Next is gene. It is a functional unit of heredity. Gene वो पार्ट है डीएनए का जो कि एक करेक्टर को कैरी करता है. दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स. सो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स. दे कंट्रोल वन करेक्टर. द फंक्शनल यूनिट ऑफ द क्रोमोसोम इज जीन. करेक्टर. द फीचर्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर नोन एज करेक्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल. जो भी हमारे फीचर्स आ रहे हैं, हमारे अपीयरेंस, हमारे पर्सनैलिटी है, दैट इज अवर करेक्टर. Example, height, shape. In the case of plants, some shapes, seed shape, etc. These are the characters of the plant. Next is trait. An inheritable character, that is feature which is normally inherited by an individual. जो कि पेरेंट्स से रिसीव हो रहा है, that is a trait. Trait कैसे? Tallness or dwarfness are the traits of a character. Height is one character. The person can be tall or dwarf. So if a person, these are the traits. Tallness or dwarfness are the traits of a character. Height is a character. Tallness and dwarfness are the traits of a character. Next definition is allele. Gene which codes for a pair of contrasting traits are known as allele. For example, in case of a character of height, usually for each character we get one allele from mother side and one allele from the father side, or one gene from the mother and one gene from the father, or one chromosome from the mother and one chromosome from the father. So in this way, one half characters come from the mother side and half character comes from the father. So each character is controlled by a pair of chromosomes or a pair of genes or a pair of alleles. In this case of height is also controlled by two alleles, because T for the tallness. Tallness is the dominant trait that I will tell you afterwards. Tallness is a dominant trait and we show this by capital T. This capital T is known as allele for tallness. So capital T is used for tall and small t is used for dwarf trait. These are the two alleles, capital T and small t. These two control the height, character of height. So capital T and small t are known as alleles of each other. Clear? Next is dominant allele. Out of capital T and small t, capital T is dominant over small t. Whenever capital T is present,
small t is unable to express itself. Only the character of capital T appears in the next progeny. So what is dominant allele? An allele whose phenotype will be expressed even in the presence of another allele of that gene. Capital T is the dominant allele. अगर स्मॉल टी भी प्रेजेंट है तब भी कैपिटल टी का ही करेक्टर आएगा, स्मॉल टी का करेक्टर नहीं आएगा. सो डोमिनेंट एलील हो गया जिसकी प्रेजेंस में रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, सिर्फ डोमिनेंट एलील का ही करेक्टर एक्सप्रेस होगा. So for height, capital T tallness allele is dominant over small t, that is dwarf allele. Next is recessive allele. An allele which is not expressed in the presence of dominant allele is known as recessive allele. Recessive allele क्या है? अगर उसके साथ में डोमिनेंट एलील है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसे फिर रिसेसिव एलील कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइट का है, उसमें दो एलील्स हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी. अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ड्वार्फनेस का करेक्टर नहीं आएगा, उसकी जगह सिर्फ कैपिटल टी दैट इज डोमिनेंट एलील है वो ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. Next is genotype. The genetic composition or makeup of an individual is known as genotype. Genotype क्या है? उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से जीन प्रेजेंट हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉर टॉलनेस उसके अंदर कौन सा जीन प्रेजेंट है, वेदर इट इज कैपिटल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी, कुछ भी जीनोटाइप हो सकता है. सो फॉर हाइट जीनोटाइप इज capital T or capital T small t is possible. So when capital T or capital T small t is present, they will show the tallness because capital T is dominant, so tallness character will appear. And for dwarfness genotype is small t because now no dominance, only recessive alleles are present, so they will show their character. So in this case, in the case of dwarfness, genotype is small t. Next is phenotype. A set of observable characteristics or physical appearance of an individual resulting from the interaction of its genotype. इन सिंपल वर्ड्स फिनोटाइप क्या है? जो पर्सन बाहर से हमें जो करेक्टर्स नज़र आएंगे वो उसका फिनोटाइप है. द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम आउटसाइड दैट इज द फिनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल. वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? वो अंदर जो जीन्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और उसका फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो फिनोटाइप इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और physical appearance of an individual resulting from the interaction of its genotype. जो भी उसमें जीनोटाइप प्रेजेंट हैं उनकी इंटरेक्शन से जो भी बाहर करेक्टर अपीयर हो रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रहे हैं, दैट इज फिनोटाइप. अब एग्जाम्पल देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल इज अ फिनोटाइप फॉर टॉल. कैपिटल टी that is a phenotype for tallness. Similarly, capital T small t, their phenotype is tall. Here also phenotype will be tall. Why tall? Because capital T is dominant, so only that dominant character will be appear. अगर किसी इंडिविजुअल में कैपिटल टी का जीन प्रेजेंट है तब भी वो इंडिविजुअल टॉल होगा. अगर किसी इंडिविजुअल में कैपिटल टी स्मॉल टी का जीन प्रेजेंट है तब भी वो इंडिविजुअल टॉल होगा, क्योंकि उसमें कैपिटल टी एक प्रेजेंट है जो कि एक डोमिनेंट एलील है. उसकी प्रेजेंस में स्मॉल टी अपना इफेक्ट नहीं शो करता. तो उस फिनोटाइप मीन्स वो पर्सन हमें देखने में बाहर से टॉल नजर आएगा. या हम प्लांट की बात कर रहे हैं, द प्लांट विल बी टॉल. एंड स्मॉल टी फिनोटाइप इज ऑफ ड्वार्फ. नेक्स्ट इज गैमीट. A mature reproductive cell that is specialized for sexual fusion is known as gamete. As you already know, in case of male gamete is sperm
and in case of female, gamete is ovum. Next is, what is cross? A mating between two individuals leading to the fusion of gametes. This is cross is a process in which the two individuals reproduce and offsprings are produced. So in this chapter we will use the term cross, a mating between two individuals. What is F1 generation? F1 means first filial generation. That is offsprings obtained from a cross between two parents. When the two parents reproduce, the offsprings which are produced, that is known as first filial generation or F1 generation. Monohybrid cross, a hybridization cross in which inheritance of one character is studied. The characters of the parents are of contrasting nature. So it is a cross in which inheritance of one pair of contrasting character is studied. एक ही करेक्टर को लेकर हम उनका क्रॉस स्टडी कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस. वन पेरेंट इज टॉल एंड वन पेरेंट इज ड्वार्फ. अगर हम उनकी स्टडी को, उनके ऑफस्प्रिंग्स को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज नोन एज monohybrid cross. Next is dihybrid cross, a cross in which inheritance of two pairs of contrasting characters is simultaneously studied. Example, अब ये डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है? जिसमें हम दो करेक्टर्स को एट ए टाइम लेकर स्टडी कर रहे हैं. अभी हम पेरेंट ले रहे हैं इन केस ऑफ प्लांट्स, राउंड ग्रीन इनटू रिंकल्ड येलो. राउंड है शेप ऑफ द सीड, ग्रीन है कलर ऑफ द सीड. राउंड शेप ग्रीन कलर, wrinkled shape yellow color. Now we are taking two characters at a time, shape as well as a color. The inheritance of such cross is known as dihybrid cross. इस क्रॉस में हम दो कैरेक्टर्स को एट ए टाइम लेकर स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. इसमें राउंडनेस जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो हमने उसे कैपिटल आर से लिखा है. जो भी डोमिनेंट ट्रेट है उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और जो रिसेसिव ट्रेट है उसे हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से लिखते हैं. राउंड है, कैपिटल आर से लिखा. वाई वी हैव रिटन टेकन टू आर आर because one are from one mother side and one are from the father side. Similarly, green is a recessive trait. In the color, yellow is the dominant trait and green is the recessive trait that you have to learn. Yellow dominant है तो उसे आपको कैपिटल लेटर से डिपिक्ट करोगे, कैपिटल Y. So a cross between round green and wrinkled yellow is known as dihybrid cross. Next is homozygous. It is a condition when an individual possesses identical alleles of a gene. Alleles दोनों सेम है. अगर दोनों alleles सेम हो तो उस कंडीशन को बोलेंगे homozygous. जैसे कैपिटल T है, is a homozygous condition for tallness. ये हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं अभी. Similarly, small t is a homozygous condition for dwarfness. क्लियर? अगर दोनों एलील सेम टाइप के हों तो वो होमोजाइगस कंडीशन है. हेट्रोजाइगस, अ कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल हैज़ अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग एलील्स और कंट्रास्टिंग जीन्स. सो एग्जाम्पल, कैपिटल टी स्मॉल टी, बोथ आर कंट्रास्टिंग. कैपिटल T for the tallness, small t for the dwarfness. This type of condition is known as heterozygous. But the phenotypically this offspring will be tall, but for tallness this is the heterozygous condition. I hope this is clear. Next time we will take the more next topics. Write these definitions in your copy. Thank you.